Welcome to Hanoi's Old Quarter, one of the most vibrant and culturally rich areas in Vietnam. And today we are exploring one of its most colorful and fascinating street, Hang Ma Street. If you are planning a trip to Hanoi, this is not just another market street. This is a place where culture, tradition, celebration and everyday local life come together in the most visually striking way. Hang Ma Street is located in the heart of the Old Quarter, an area known for its narrow street, historic building and traditional trade culture. For centuries, each street here specialized in selling a particular type of product: silk, silver, herb, tools, paper item, and Hang Ma became known as the decorative street. Today, it remains one of the most famous shopping street in Hanoi for decorative items, festival supplies, gift product, home decor pieces, and seasonal accessories. As a traveler, जब आप इन streets में जाते हो, the first thing आप notice करते हो, there are a lot of colors. Bright red, gold, yellow, and vibrant pattern dominating the shop. Lantern, ornament, toys, paper, craft, and handmade decorative item hanging from every corner. It feels like walking inside a living festival. Hang Ma is especially popular during major celebrations like Mid-Autumn Festival, Lunar New Year, Halloween, and Christmas, when the entire street transforms into a theme visual experience. But even outside festival season, the street stays lively because locals come here to prepare for family events, home decoration, and cultural celebration. This is why Hang Ma is not only a shopping destination, it is a cultural observation point. आप यहाँ local life को real form में देख सकते हैं. People come here to buy lanterns for children, traditional decorative pieces for home, prayers offering and celebration items used in Vietnamese ritual and ceremonies. Many of these items carry cultural meaning, symbolizing prosperity, protection, happiness and family bonding. From a travel perspective, this street gives आपको very authentic old quarter experience. It is crowded, energetic, sometimes chaotic, but always alive. And this is exactly what makes Hanoi unforgettable. अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो Hang Ma is a visual paradise. The lighting, hanging decoration and shop arrangement creates perfect frames for street photography, travel reels and cinematic footage. The best time to visit is in the evening when lights turn on and the street looks even more dramatic, but daytime visits are equally interesting because आपको local buying behavior, bargaining culture and shop activity clearly देखने को मिलता है. Prices here vary depending on the product. Small decorative items are quite affordable, while handmade craft and detailed piece may cost more. Bargaining is common, but it should always be done politely and respectfully. When exploring Hang Ma, आपको सिर्फ shopping पर focus नहीं करना चाहिए. Walk slowly, observe, notice how shop owners arrange product, how local choose items, how kids react to colorful toys, how elder pick traditional decorative pieces. कितना कुछ है ना देखने को. This is real travel storytelling, not just places but people and emotion. Hang Ma also represents the evolution of Hanoi. Traditional paper offerings are sold alongside modern LED decoration. Handmade crafts sit next to imported party items. Old culture and new lifestyle exist together on the same street. That contrast makes the experience unique. For first-time visitors to Hanoi, the Old Quarter itself is a must-visit area. And within the Old Quarter, Hang Ma is one of the most photogenic and culturally expressive streets. It is easy to reach by walking if आप Hon Kem Lake के पास stay कर रहे हैं. Most travelers explore the street as part of Old Quarter walking tour. Nearby आपको street food option, cafes, souvenir shops and historic building मिलती है. So आप एक सिंगल विजिट में मल्टीपल एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं. अब मेरी साइड से मैं आपको कोई ट्रैवल टिप देना चाहूंगी. विजिट ड्यूरिंग लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग. कैरी कैश फॉर अ स्मॉल परचेजेस बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्यूआर कोड नहीं होगा जो कि लोकल बैंक का क्यूआर कोड होता है. तो आई थिंक अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो कैरी कैश. Respect local space. Shops are small and busy. Avoid blocking shop entrance while filming. इफ आप वियतनाम ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं देन स्ट्रीट्स लाइक Hang Ma हेल्प आपको डेस्टिनेशन को डीपर लेवल पर समझने में. टूरिस्ट अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं बट लोकल मार्केट रिवील्स द रियल पर्सनैलिटी ऑफ अ सिटी.
Hanoi is not just about monument and museum. It is about people, everyday routine, and cultural expression. And Hang Ma is one of those places where आपको culture visible form में मिलता है. Families shopping together, travelers capturing memories, local preparing for celebration. Everything happened at the same time, on the same street. If आपको वियतनाम का authentic shopping experience चाहिए, then this is one of the most recommended street to explore. आप यहाँ से small souvenir, decorative piece, gift item and festival product buy कर सकते हैं that truly represent local culture. Many travelers skip local streets and only visit malls. But real Hanoi mall में नहीं street पर मिलती है भाई. The sound, the light, the bargain, the crowd movement and the smell of street food. The shop conversation, all these elements together create a sensory travel experience. This is why Hang Ma is often included in walking tours, travel guides and local recommendation. If आप travel content create करते हैं, this street gives endless storytelling opportunities. From culture to lifestyle to shopping to festive transition, everything exists here. And every visit looks different because decoration keep changing depending on the season. That is the beauty of Hanoi. No two visits feel the same. Before leaving, take a moment to just stand and observe the street. Let the energy sink in. This is where travel becomes memory. अगर आप वियतनाम विजिट प्लान कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेसेस आपको ओल्ड क्वार्टर एक्सप्लोरेशन लिस्ट में ऐड करना ही चाहिए. एंड इफ आपको शॉपिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना पसंद है, Hang Ma विल नॉट डिसअपॉइंट यू. इट इज कलरफुल, इट इज लाउड, इट इज ट्रेडिशनल, इट इज मॉडर्न, इट इज हनोई. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस वाइब्रेंट स्ट्रीट विद मी. अगर आप वियतनाम ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, देन आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. होटल्स, टूर्स, एक्सपीरियंस, ट्रैवल टिप्स एंड हेल्पफुल लिंक्स टू मेक योर ट्रिप ईजियर. आपका वेकेशन प्लान करना अब सिंपल है. जस्ट एक्सप्लोर द लिंक एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. एंड अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस पसंद आते हैं, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल देवशी खंडूरी ऑफिशियल फॉर मोर ट्रैवल गाइड्स, कल्चर एक्सपीरियंस एंड रियल स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशन. योर जर्नी कुड बिगिन विद जस्ट वन वीडियो. See you in the next exploration. और मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ रहा है हनोई ट्रेन स्ट्रीट का. उसे देखना मत भूलिए. टेक केयर. यू ऑल आर वेरी वेरी प्रीशियस. बट डोंट गो एनीवेयर. ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है. अभी हम कार में हनोई को और भी एक्सप्लोर करेंगे. और ये जो गाना चल रहा है, ये मेरा लिखा हुआ है. इसे ज़रूर सुनिएगा एंड तक. बाय बाय. Lip gloss, little black dress, fairy lights tangled in my hair. आज रात बस feel I feel best year loading I swear. थोड़ा सा नखरा, थोड़ा सा fire, दिल बिच धड़कन on replay. Pour me that midnight desire, baby. Just pull me away. New year, new touch of my way. Slow dance, slow sip, no hate. हो जावे सारी पुरानी तोहफे. बस तू बस मैं सब okay. मैं कहती हूँ this year I glow. I already know good wishes प्यार for all my crew. But tonight I just dance with you. Happy, see my smile, wing liner shirt, total wild, boloji ready for this ride. सारी जगह तू मेरे side, रब रखा मोहब्बत मेरे यार. हर दुआ विच उनका नाम, पर तेरे साथ midnight count. Body on body come, oh you सोनी hold me tight and I feel the vibe side to side. Attention now, बस तू ही तू tonight. तेरे गाना मेरी सांस हो जावे slow motion trance. Never sad, never romance. ना चले one more dance.
Thank you. Bye bye.